Hello, guys. Let people join in because I'll be live on two platforms, Facebook and YouTube. Hello, everyone. Okay, we are on. Okay. Pakistan ka hoga, bilkul stay positive and optimistic. Things will improve. When things are down, then the only way is going up. Yes, Ramzan is going great. Hello, everyone. Hello. Assalamu alaikum. So audience has started to join on YouTube and Facebook as well. I'm live on both platforms for the first time. Let's see how it goes. Just kamar kiya nahi, just be at it. You need to develop a habit. Start with 10 minutes and slowly अपना गोल बनाएं कि रोजाना आप उसमें 5% इंक्रीमेंट करेंगे. So start with 10 minutes, then 11, then 12, and then limit it to 40 minutes. That's good enough for you. Hello, everyone. Okay, a lot of people have joined on Facebook as well. Thank you, Ibrahim. You can send in your messages. There's nothing specific to talk about. Usually, I respond to the question and answer session. We have actually a question and answer session, and I respond to any of the queries that you might have. I'm good, everyone. I'm doing great. Mohsin, I think you need to keep yourself busy. Yaar. There are a lot of books I can recommend, but why? The life is so beautiful, yaar. कोई काम कर सकते हो. Um, you can pursue your passion. You can find your passion. You can travel. You can earn money. There are hundreds of things to do. Don't think bad. Addiction of what? Faraz. Thank you, Mirza Ahmad. I was in actually Kashmir last month. No, last to last month. Thank you, Kiran. Hello, Marjan. Shifting to a foreign country, आई थिंक इट्स देखें प्रैक्टिकली सोचें प्रैग्मेटिकली सोचें तो लगता तो यही है हर किसी को कि बाहर चले जाएं बट आई थिंक इट माय थॉट प्रोसेस वर्क्स वेरी डिफरेंटली और आज मैंने फेसबुक पे भी ये पोस्ट लगाई अपने यूट्यूब के ऊपर भी लगाई कि हम पाकिस्तानियों के एवरी वन ऑफ अस नीड्स टू कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री सो इफ यू रन अवे देखिए इसमें कोई हार्म नहीं है यू कैन ऑफ कोर्स गो आउट एंड यू कैन अर्न गुड फॉर योर फैमिली और आप बाहर से रह के मेरे ख्याल में आजकल पाकिस्तान की ज्यादा खिदमत कर सकते हैं बिकॉज यू कैन सेंड इन डॉलर्स एंड रेमिटेंसेस बट आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड टू प्ले आवर पार्ट टू गेट पाकिस्तान आउट ऑफ दिस क्वागमायर इस दलदल से निकलने के लिए I'm good. Let me check the messages on Facebook as well. मैं दोनों जगह देख रहा हूँ सो हेयर इज द लैपटॉप एंड हेयर इज द मोबाइल सो प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा कि मैं कहाँ पे देख रहा हूँ सो ऑन द लैपटॉप आई एम लाइव ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड ऑन मोबाइल आई एम लाइव ऑन माय फेसबुक okay bro I want to gift you a book how is it possible Umar Umar first of all thank you so much for your gesture I'm very happy and it's so kind of you बट आप मेरे जो मुझे आपने बुक गिफ्ट करनी है ना वो मेरे बिहाफ पे किसी ऐसे शख्स को गिफ्ट कर दें जो शायद उस बुक को अफोर्ड ना कर सकता हो वो समझे मैं समझूंगा कि आपने मुझे ही दे दी बुक
Any suggestion for Islamic reading? Read Reconstruction of Religious Thought in Islam by Iqbal, the best book on understanding what deen is. Okay. Sir, can you suggest me any book regarding anthropology? Anthropology in what? They can be a lot of books, but exactly what in anthropology? You want to study about culture, about language, about uh, behavior of people in a particular nation. What is it that you're looking for? Salman Bhatt. Thank you, Salman. I hope you're doing well in China, Salman. Just started reading Readistan. It's a beautiful concept. I'm loving it. 15-1. Thank you, Vakas. I really appreciate and cherish your comment. Thank you so much. I'm never able to complete it. Kindly give me some advice on how to overcome this. Aftab, you need to select the right book. अक्सर मेरे साथ अब भी होता है कि मैं एक बुक स्टार्ट करता हूं और मैं उसको फिनिश नहीं कर पाता. उसकी वजह मुझे ये नजर आती है कि मेरी सिलेक्शन सही नहीं होती. I do not select the right book sometimes. Very rarely it happens. तो selection of book is very very important. कि how do you if you are you able to select it the right book that suits your personality or not. अगर गलत किताब select करेंगे you will lose your interest and you will not be able to finish it. So किताबें हमेशा देख के select करें जो आपके इंटरेस्ट की हो. उसकी probability of completion बढ़ जाएगी. ओके जी. Oh, lot of messages. दीन और दुनिया अलग अलग चीज है या एक ही है? अगेन ये लोगों को गलत सिखाया गया. एक्चुअली ये जो दुई है ना, डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये डुअलिटी का है ही नहीं. कुरान को जब आप पढ़ेंगे तो कुरान, when you study Quran in the real essence you'll get to know कि ये दुई नहीं है, ये डुअलिटी नहीं है, it's all the same thing. इसी की एक्सटेंशन है. they both work together. Okay. सलाम सर, what about your library in Tando Mohammad Khan? लाइब्रेरी इज डूइंग वेल. मेरे पास सामने, अच्छा मजे की बात यह है कि जब मैं टंडो मोहम्मद खान से वापस आया ना, द डे आई केम, मैंने वहां पे तकरीबन 2000 बुक्स, आई थिंक 2100 के करीब किताबें मैंने इनिशियली दी. जब मैं वापस आया, जिस दिन मैं वापस आया, मुझे अगली 2000 की स्पॉन्सरशिप उसी दिन अगली अगली नेक्स्ट मॉर्निंग तक मिल गई थी. ठीक है. और अभी रिसेंटली एक और वो सामने मेरे कार्टन पड़ा हुआ है, वो मुझे भिजवाना है फॉर चिल्ड्रन. So we will be completing 5,000 books very soon. I think within a month we'll complete the target of 5,000 books. Okay. Bro, in my circle, no one is interested in reading. Umar, yaad rakhein. If you continue to do what everyone else is doing, then there won't be any success. आपने हर वो चीज करनी है. मैंने आज अपने स्टूडेंट्स को भी बताया कि एक लिस्ट बनाएं, अपनी जिंदगी में आसपास लोगों को देखें, वो लोग जो कामयाब है जिंदगी में और वो लोग जो नाकाम है, उनकी हैबिट्स बनाएं कि वो क्या काम करते हैं. जो नाकाम लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी में अचीव नहीं किया, वो जो काम करते हैं आपने उससे उलट करना है. सो इफ यू थिंक पीपल आर नॉट रीडिंग, तो देन यू नीड टू डू एग्जैक्टली ऑपोजिट, बिकॉज यू विल फाइंड somewhere light at the end of the tunnel which will take you through. Okay. Jia Khan, ISB, you, I think, work in education, work to uplift people intellectually in the country. That's the best profession one can choose. Suggest book, The Story of Philosophy. Ahmad Jilani एक book है Will Durant की, The Story of Philosophy. Exactly what you need. ये book note कर ले. How to publish a book when you can't support it or when you have no money? Okay, a lot of people ask me this question. Question is about how to publish a book. देखें, दो यूजुअली तरीके होते हैं किताब पब्लिश करने के. एक होता है सेल्फ पब्लिकेशन. ठीक है, आपने किताब लिखी, आपने उसका मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया और आप उसको किसी भी पब्लिशर के पास ले गए, उर्दू बाजार में कहीं पर भी ले गए, और आपने कहा कि यार मेरी 100 कॉपियां छाप दे, और वो आपसे पर कॉपी 400-500 जितने भी पैसे बनते हैं, आपने वो कॉपी ली और आपने उसको बेचना शुरू कर दी. दिस इज अ वेरी फास्ट वे ऑफ डूइंग इट, बट इट डजंट लीड टू मच सेल्स, क्योंकि जब तक आपके पीछे पब्लिशिंग हाउस नहीं होता तो आप उसको मार्केट नहीं कर सकते ज्यादा.
अब इन माय केस इफ आई टेल यू, मेरी एक एसोसिएशन है लिबर्टी बुक्स के साथ, इट्स द बिगेस्ट नेम इन द कंट्री, वहां पे मेरा प्रमोशन कोड भी चलता है, एंड आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद द मैनेजमेंट एज वेल। सो मैंने आज से 2 साल पहले उनको अपना प्रपोजल भेज दिया था कि मैं ये किताब लिख रहा हूँ, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड कि दिस इज समथिंग शाहरुख व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने मेरी किताब छापी, मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया अपनी किताब को छापने में, ठीक है। उन्होंने मार्केटिंग की, और ऑफ कोर्स मेरा एक कम्युनिटी बनी हुई है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। तो and that really helped me, so my book has become a bestseller in the past 3 months of its launch। अब उसमें फायदा ये हुआ कि लिबर्टी बुक्स की एक्सटेंसिव प्रेजेंस है पाकिस्तान में, तो जो भी लिबर्टी बुक्स के स्टोर पे गया, उसने रीडिस्तान देखी और उसने परचेज कर ली वो किताब। अब इसमें मेरा 1 रुपया नहीं लगा, लेकिन पब्लिशर को यह गारंटी होनी चाहिए एटलीस्ट थोड़ी बहुत, कि जो किताब, अगर पब्लिशर आपके बिहाफ पे लाखों रुपए की किताब छाप रहा है, तो उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये किताब बिकेगी। तो मेरी किताब में उनको एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस था कि ये शाहरुख की किताब है तो ये बिक जाएगी, ठीक है। एंड इट बिकेम द बेस्ट सेलर, सो द पब्लिशर मेड मनी, आई मेड मनी। लेकिन उसका ये होता है कि आपने पब्लिशर को ये यकीन दिलाना होता है कि द बुक विल सेल। अच्छा, मोस्ट ऑफ द पब्लिशर्स डू दिस, लिबर्टी बुक्स डजंट डू दिस, बिल्कुल भी नहीं करते वो ये। लेकिन कुछ पब्लिशर्स ये करते हैं कि अगर वो आपकी 200 की बुक्स छापेंगे या 500 छापेंगे ना, वो कहेंगे पहली 100 आप खुद खरीदें, राइट। सो दिस इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। बट मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, सेल्फ पब्लिकेशन के भी और थ्रू अ पब्लिशिंग हाउस एज वेल। ओके, Umar Iftikhar, hello Shahrukh bhai, how do you manage time to research, record and edit videos along with your office time? So guys, I run a company, मेरी software company, I'm the CEO of that company. I teach at business schools. I read, of course, reading is also one of my profession. Book buddy is one of my profession. So I do 4 to 5 and then I write as well. So मैं तकरीबन 4-5 चीजें हैं जिनके जरिए मैं, मतलब you can consider them my profession. Your question is, Umar, how do I manage time? देखिए, टाइम, मैं हमेशा, मेरी एक फलसफा ये है कि जब आपको लोग कहते हैं यार मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा, यार वक्त नहीं है, तो वो एक्चुअली गलत स्टेटमेंट होती है। एक्चुअली लोगों को कहना चाहिए कि यार मेरी प्रायोरिटी नहीं है तुमसे मिलना। सो इट्स ऑल अबाउट, उमर, सेटिंग द प्रायोरिटीज। फॉर मी माई प्रायोरिटी इज माई वर्क। सो जब प्रायोरिटी मेरा काम बन जाता है तो मैं हर चीज के लिए टाइम निकाल सकता हूँ। सिंपल है, आई वर्क फ्रॉम 6:30 इन द मॉर्निंग टिल 10:30 एट नाइट, और समटाइम्स 11। यूजुअली मैं 10, साढ़े 10 बजे सो जाता हूँ, बट एवरी टाइम ऑफ द डे दैट आई एम अवेक आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है। या मैं बुक पढ़ रहा हूँ, या मैं नोट्स बना रहा हूँ, या मैं प्री प्रोडक्शन कर रहा हूँ, या मैं अपनी कंपनी का काम कर रहा हूँ। देयर इज नो आइडल और लेजर टाइम। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स फॉर मी। इट माइट बी कॉल्ड अ हसल, इट माइट बी कॉल्ड अ बोरिंग लाइफ, बट आई फाइंड ग्रेट प्लेजर। मुझे तो बहुत मजा आता है अपनी जिंदगी में। ओके, sir, what's your opinion about Chat GPT? Is it posing threat to human intellect? Chat GPT is absolute killer, bhai. Chat GPT is out to eat our jobs. Content writers फारिग हो जाएंगे, lyrics writers फारिग हो जाएंगे, um, even to some extent जो लोग कोड करते हैं, बेसिक लेवल की जो कोडिंग है, it might eat up their jobs as well, right? So चैट जीपीटी का फ्यूचर, आगे फ्यूचर ही चैट जीपीटी का है, आगे फ्यूचर ही ऑगमेंटेड रियलिटी का है, आगे फ्यूचर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आगे फ्यूचर ही बिग डेटा का है, आगे फ्यूचर ही पाइथन लैंग्वेज का है। सो we have a two pronged approach. One is we resist it. याद रखें, टेक्नोलॉजी के रास्ते में, टेक्नोलॉजी एक ऐसा बुलडोजर है, इट्स अ मैग्नानिमस कोलोसल बुलडोजर। टेक्नोलॉजी के सामने जो भी आता है ना, उसको कुचलता हुआ, मर्डर करती हुई आगे निकल जाती है। टेक्नोलॉजी के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। सो ईदर वी रेजिस्ट इट, द अदर ऑप्शन इज वी अडॉप्ट इट। एंड लाइक आई सेड, you cannot resist technology, so the best thing is to adopt it, to learn it and put it to use.
काइंडली रिव्यू द बुक. अच्छा, रीडिस्तान का मैं रिव्यू खुद कर लूंगा. आई विल रिव्यू रीडिस्तान. ओके. ओके. डू यू राइट शॉर्ट स्टोरीज? नो, आई डोंट राइट शॉर्ट स्टोरीज. फेसबुक के भी कमेंट्स का रिस्पॉन्ड कर देते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उमर जोहेब. डू यू राइट शॉर्ट और नहीं? ओके. To make notes, please make brief. Okay, I'll try to make a video on this. What's your opinion on Parvez opinion? Yeah, Parvez Hood bhai is a good guy, but उनकी कुछ बातों से मैं agree नहीं करता. But on the whole, people like him, rational minded लोग हमें society को चाहिए. जरूरी नहीं. अच्छा, एक बात आप लोग याद रखें कि अगर किसी शख्स के किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अग्री नहीं करते ना, तो आप उसको बुरा भला नहीं कह सकते. यार ये परवेज उद भाई ये हैं और ये हैं और ये हैं. हाँ, आप बड़े ही पोलाइट तरीके से, एक पढ़े लिखे अंदाज में, एक अच्छे मुअज़्ज़ज़ शख्स के अंदाज में आप कह सकते हैं परवेज उद भाई की कुछ बातें जिनसे मैं अग्री नहीं करता. परवेज उद भाई बेकार है, ये है, वो है. नेवर डू दैट. Never demean people. Okay, you might agree with him on some things, you might not you might disagree with him on something. So हमेशा अपना पर्सपेक्टिव ना बैलेंस रखें, हमेशा अपना पर्सपेक्टिव को ओपन रखें, और पढ़े लिखे लोगों की तरह we should learn to critique people. So you asked for my opinion. परवेज हुद भाई की कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ. जहां से philosophy of Friedrich Nietzsche versus philosophy of Iqbal. Of course, philosophy of Iqbal is magnanimous. It is in no way belittles Nietzsche or Nietzsche, but for me, it's the philosophy of Iqbal. My child wants to go into politics. He has not said, but he read history, political science. He's full of knowledge. He's 16. Should I encourage him? Of course, you should encourage him. जब यंग लोग, पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, तो जिस तरह के गूंज और रोग्स और जिस तरह के लोग हैं हमारे पॉलिटिक्स में, तो they'll continue to rule. So my recommendation is strongly, I might venture into politics as well sometimes in the future. You never know, right? So put him into politics, make him understand what politics is all about, and encourage him. Socialism versus communism. Ali Mujtaba, I will shoot for this video hopefully tomorrow. Okay, मेरा सारा कंटेंट रेडी है. इट्स नॉट एक्चुअली सोशलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, बट मैंने कम्युनिज्म के बारे में एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, काफी वो उसकी व्यूअरशिप है, अभी रिसेंटली पब्लिश की थी. सोशलिज्म के बारे में वो वीडियो है, व्हाट इज सोशलिज्म, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. ओके यार, ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में लोग बड़ी बात करते हैं. के अजीज, अच्छा यू नो व्हाट, आज से 3 साल पहले मैंने इस बुक का रिव्यू यूट्यूब के ऊपर पब्लिश किया था. ओके, एंड देन आई रिमूव्ड इट. रीजन बीइंग, मुझे लग रहा था कि कहीं ना देखें, जो के अजीज ने बात की है मर्डर ऑफ हिस्ट्री में, वो हिस्ट्री ऑफ, आई थिंक मर्डर ऑफ हिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, वो बातें बिल्कुल सही है. लेकिन मेरी रिमूव करने का उसका मकसद ये था कि somehow it was creating unnecessary nuisance. ओके, वो एक कि 14 अगस्त पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डेट नहीं है और 23 मार्च पाकिस्तान डे नहीं है. फ्रॉम अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन अननेसेसरी न्यूसेंस वो क्रिएट कर रही थी, तो मैंने उसको फिर आई पुट दैट वीडियो डाउन. बट व्हाटएवर ही हैज रिटन इन दैट बुक, दैट्स वेरी राइट. सर, क्या कायदे आजम सेक्युलर थे? ओके, आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन इन लाइव सेशन. फॉर दिस, you and all of us need to understand what secularism is. ठीक है, गलत हमें बताया गया सेक्युलर. अब मैं आपको एक बात बताऊं, सेक्युलरिज्म इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम. इस्लाम का एक बहुत बुनियादी उसूल है सेक्युलरिज्म, जिसको इज्तिहाद कहते हैं. हमें पता नहीं क्या लादीनियत बता देते हैं कि लादीनी हो जाना सेक्युलर है. दैट्स नॉट सेक्युलरिज्म. ओके, सो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सेक्युलरिज्म होता क्या है, एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन इन अ वीडियो कि कायदे आजम, द ग्रेट लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, was he secular or not? जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, यार ये रिव्यू काफी दिनों से पेंडिंग है, so I'll write this down.
Okay. 48 Laws of Power book review. Asjad, I've already reviewed the book. 48 Laws of Power का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूं. आप मेरे YouTube में वीडियो आर्काइव्स में जाएं. One of the best books I have ever read. Yeah, Loop of the World. I think. Have you read *Sapiens* and have you read *Homo*? I think both of these books will really help you. Okay, so says can no. अच्छा ये मैंने बता दिया. Thoughts on दोस्तियोफी और दोस्तियोफ्स्की की बुक्स का भी मैं 2 बुक्स का आई थिंक रिव्यू कर चुका हूँ. ग्रेट रशियन लिटरेचर, दोस्तियोफ्स्की एंड अपना क्या कहते हैं अनदर गाय, हाउ कैन आई फॉरगेट हिज नेम. इमेजिन करें मेरी मेमोरी को क्या हो गया. अपना look at me. I've forgotten the name. So Dostoevsky and Leo Tolstoy. How can I forget his name? Leo Tolstoy. Brilliant. Russian literature is par excellence. The way they understand human emotions, human psychology, rough and tough and absolutely raw. So I love Dostoevsky both and of course the other guy. Homodeus, Homodeus. Homodeus is a book by Yuval Harari. Sir, any philosophy books? The Story of Philosophy is very good. डी के बुक्स की जो फिलोसफी बुक है वो जरूर खरीदें. ये पीछे पड़ी हुई है. Here you go. ये that's the डी के बुक्स फिलोसफी. 3-4 हजार रुपए की किताब है, लेकिन ये आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है. आप भी पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे और उसके बाद उनके बच्चे भी पढ़ेंगे. Okay, the most underrated subject that will be most important. The most underrated subject that will be most important for Pakistani is 2 subjects, philosophy and psychology. Why I'm following you since 2019 when I was busy with competitive exam. I used to watch your vocabulary video, but now you're not. हाँ. अच्छा, back in the day. अच्छा, ये मुझे दोबारा start करना है vocabulary videos. So I'll start them. ये मैंने काफी अरसे से note किया हुआ है. So I'll hopefully record these videos soon. And thank you for following me since long. Deep Work book का भी review कर दे. हाँ, Deep Work ये सामने ही पड़ी हुई है मेरे. ये it's still on my table. It's a brilliant book. Why the focus on computer science is very weak in Pakistan? I don't know. पढ़ाने वाले सही नहीं है, गाइडेंस करने वाले सही नहीं है, मेंटोर सही नहीं है, कोचिंग सही नहीं है. इंडिया woke up to computer science back in the 90s. उन्होंने 1991 में अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया. And since then, look at where India is. $200 billion plus of IT exports. हमारी $2.5 billion है. $200 billion plus. That's the power of computer science and technology. So हमारा नीड ऑफ द आवर है कि अपने घर में अगर 2 बच्चे हैं तो एक को कंप्यूटर साइंस में डाल दें, 5 बच्चे हैं तो 2 को कंप्यूटर साइंस में, 3 को कंप्यूटर साइंस में डाल दें. ओके. Be able to. I am a bit confused that will I be able to crack medical exam? I'm in drop here. Kindly guide. Aisha, I can just wish you best of luck. And I think you will do it if you put your heart and mind into it. Anything that you can conceive, you can achieve it. So if you think, if you have the right strategy, you're working hard, you're working, maybe studying 5-6 hours every day, you will crack it. And my best wishes for you. अच्छा जी, फेसबुक वालों को भी जरा रिस्पॉन्ड कर दें. 1 hour is good enough, bhai Naseem. 1 hour of focused study time is good enough for you. I don't know what you're doing. You're still a student, but 1 hour is good enough. अगर आप focus होके पढ़ रहे हैं without any disturbance from mobile. अच्छा जी. सर क्या शेख मुजीबुर रहमान यार, how what should I respond to this question? यार मैं इस तरीके से ना, मैं मेरी आदत नहीं है अपना
जर्नलिस्ट की तरह। और मेरे आपको पता है मेरी वीडियोस के पीछे लॉजिक होती है, रीजनिंग होती है, रिसर्च होती है। मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, फिर आप जज कीजिएगा कि व्हाट वी वाज। ओके, व्हाई द स्कूल्स डोंट फोकस ऑन टीचिंग मैनर्स बिफोर नॉलेज? एब्सोल्युटली। देखिए हमारा जो पूरा एजुकेशन, मैं एक्चुअली कहता हूं कि आवर कंट्री नीड्स अ नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट। हमारे मुल्क को ना एक ऑडिट की जरूरत है, जिसमें हमारी पूरी सोच, द वे वी टॉक, द वे वी इंटरैक्ट, द वे वी execute ourselves in the society, the way we live within our society, the way we interact with our people, the way we conduct our business on the roads, everything needs to be changed. हमारा नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट, हमारी नेशनल वोकैबुलरी चेंज होने वाली है। वही पुरानी बातें, वही 200 साल, 50 साल, 100 साल पुरानी बातें, वही वोकैबुलरी, उसी तरीके से चीजों को डील करना, वही एक लाइन के पीछे चले रहना। सो our school education has totally collapsed. It hasn't led to anything. It has produced followers rather than leaders. कोई नोवेल्टी ऑफ थॉट नहीं है, कोई ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट नहीं है। आपको पता है 102 साल हो गए, नहीं 120, 1901 में शुरू हुआ ना, 122 साल हो गए नोबेल प्राइज को बने हुए। Only two Muslims, one of course was Professor Abdul Salam. According to the constitution of Pakistan, he's a non-Muslim. So if you exclude him, only two Muslims have won Nobel Prize in science. I think one was in chemistry and one was in physics, in 122-year history of Nobel Prize. अब हमें क्या सिखाया जाता है, मौलवी क्या सिखाते हैं, ये नोबेल प्राइज यहूदी साजिश है। ये हर चीज में देखें, ये जो नैरेटिव है ना हमारा, यहूदी साजिश, और हर चीज के पीछे अपना वेस्ट के प्रोपेगेंडा एंड ऑल। वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस। जिस हाल में आज हम मौजूद हैं वो हमारी वजह से है। वी आर द रीजन बिहाइंड दिस टर्मोइल, एंड इफ वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट, देन वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। सिंपल सी बात है। कुरान मजीद चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 11, सूरह राद, Allah writes, verily God doesn't change the condition of people until and unless they are not willing to change what is in themselves. जब तक लोग खुद अपने अंदर नहीं बदलेंगे, अल्लाह के ऊपर हर चीज अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। ओ भाई, अल्लाह कुरान इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ा करो ट्रांसलेशन के साथ, कि व्हेन गॉड इज राइटिंग इन द होली बुक, कि भाई जब तक तुम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करोगे, मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर कि मैं तुम्हारी हालतें बदलूंगा। ओके ओके, सॉरी भाई, ये मुझे फेसबुक कम्युनिटी को भी, so I'll give some next 5 minutes to the Facebook community. So I'm now moving to Facebook. Okay. Zara Umar, can you make a video on how to revive reading habit? I used to be an avid reader or of circumstance and lifestyle. I have made a video on this, Zara, already. Okay. So what you need to do is go to my YouTube, and there you need to search for a video titled how to develop reading habit, और आगे book buddy लिखें. So you'll find actually 1 or 2 वीडियो, इनफैक्ट 2 वीडियोस देखें आप। एक ये वीडियो देखें और एक मैंने बनाई थी मैथमेटिक्स ऑफ रीडिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रीडिंग का बजट किस तरीके से सेट करना है। ओके, सो यू नीड टू वॉच दैट वीडियो। इज पाकिस्तान अ फेल्ड स्टेट? अ फेल्ड स्टेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सो फार वी आर वेरी क्लोज टू बिकमिंग अ फेल्ड स्टेट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा $1400 है, ठीक है। सिंगापुर का जीडीपी पर कैपिटा $82,000 है। इवन इंडिया का जीडीपी हमारे से डबल से भी ज्यादा, आई थिंक समवेयर क्लोज टू $3,200। सो उसके हिसाब से देखें, कंपैरिजन करें, इवन बांग्लादेश का बेटर है। बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $60 बिलियन है, हमारे $9 बिलियन है, अगर टोटल रिजर्व्स मिला लें स्टेट बैंक के और प्राइवेट बैंक्स के, कमर्शियल बैंक्स के। सो उस लिहाज से देखा जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए, आफ्ताब हुसैन, तो वी आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू बिकमिंग अ फेल्ड स्टेट। वन गुड थिंग दैट हैज हैपेंड विद पाकिस्तान इज, ये बात बतानी बहुत जरूरी है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने या ब्यूरोक्रेसी ने, एस्टैब्लिशमेंट ने जो भी गंद किया है, एक चीज अच्छी की है, हमने जो कर्जे वापस किए ना, अक्सर ज्यादातर कर्जे हमने टाइम पे वापस किए, जिसकी वजह से आज भी जो मुल्क है वो हमें कर्जे देने को राजी हो जाते हैं। So that's something which is positive. I personally think Pakistan has a bright future, okay, especially for people who are willing to go the extra mile, who learn, who educate themselves. वजह क्या है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एवरेज इंटेलेक्ट है, ओके। वी आर
country, let's accept this for a fact, we are a country of mediocre people जहां पे इतना एवरेज, इतना इंटेलेक्ट, इतना इंटेलिजेंस नहीं है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं या एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें जो लोग थोड़े से ज़हीन हो, थोड़े से जिनकी बेसिक सही हो, तो वो जल्दी से ऊपर आ जाते हैं। vis-a-vis if you go to US or in any of the Western or European countries. So अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में opportunities of growth are huge. ठीक है, if you're willing to work a little bit harder than the rest of the community. I hope I have answered your question. Okay. So reconstruction of religious thought का next chapter. Okay. Lot of people have asked me this question and I absolutely am very very thankful कि मेरी जो रिकंस्ट्रक्शन वाली सीरीज है, इंटरनेट पे बहुत सारी रिकंस्ट्रक्शन की सीरीज है, लेकिन सबसे ज्यादा जो व्यूअरशिप है वो मेरी रिकंस्ट्रक्शन सीरीज की है। इनफैक्ट मैं अल्लामा इकबाल के पोते से मिला, उनका नाम भी इकबाल है, इकबाल सलाहुद्दीन से मिला। उन्होंने कहा शाहरुख के मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है रिकंस्ट्रक्शन पे, बट तुम्हारी जो वीडियो थी ना वो सबसे आसान थी, इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो द गुड न्यूज फॉर यू इज दिस वेडनेसडे जो 4th लेक्चर है रिकंस्ट्रक्शन का, कमाल का लेक्चर है। एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी इन दिस लाइव सेशन, जो मेरी अगली वीडियो वेडनेसडे को आएगी, इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी, कॉन्सेप्ट ऑफ तकदीर के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बात कर चुका हूं कि तकदीर क्या चीज है। सो तकदीर के बारे में भी मैं दोबारा बात कर रहा हूँ उस सेशन में, उस वीडियो के अंदर। कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी, what does the Quran say about the individuality of human beings and this concept of egohood and ultimate reality. It will be a mind-boggling, it will be a wonderful video. You must watch that. Bertrand Russell, salute to the great man. Bertrand Russell की कितनी किताबें आपको रेकमेंड करूं? The Conquest of Happiness पढ़ें, In Praise of Idleness पढ़ें, Why I Am Not a Christian पढ़ें, Skeptical Essays पढ़ें, और कौन सी है, 3-4 और बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैंने अभी आपको 4 बुक्स बता दी हैं। बर्ट्रैंड रसल, व्हाट एन उबर गुरु, अल्टीमेट बंदा। Do you think that Pakistan can become a progressive country in the presence of establishment? I personally believe that it's not possible in the presence of establishment. Okay, so I have, again, we need to play our part. That's how I see it, Abdullah. Don't worry, establishment है, नवाज शरीफ है, खान है, जो भी है, इन लोगों ने किसी ने आपके घर पे आके कोई मदद नहीं करनी। We have to help ourselves. So how I look at it, Abdullah, since you have asked the question from me, how I look at it is, do not follow, और फॉलो करना चाहे कर ले, लेकिन जो पॉलिटिकल सर्कस है ना, ये चलता रहेगा, अपनी जिंदगी इसमें ना वेस्ट करें। आपका गेम प्लान अपनी जिंदगी के बारे में रूथलेसली ऑनेस्ट और स्ट्रेट होना चाहिए। अब वो गेम प्लान क्या है? एजुकेशन हासिल करना, एजुकेशन कंप्लीट करना। कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि उसके बाद आपने किताबों को हाथ नहीं लगाना। आज का दौर ऐसा है कि ह्यूमन बिकम्स आर बिकमिंग ऑब्सोलीट विद द स्पीड ऑफ लाइट, so every quarter you need to learn something new, learn a new language, learn coding, learn programming, improve your communication skills, start a company, whatever that is, you need to be at the top of your game. एजुकेशन हासिल करें, किताबें पढ़ें, इंटेलेक्चुअली साउंड बनाएं, स्किल बिल्डअप करें, कोई नई जबान सीख लें, कोई नई स्किल सीख लें, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका खुद ब खुद लेवल ऑफ अवेयरनेस, योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड योर फाइनेंशियल कंडीशन विल इंप्रूव। और आपको आहिस्ता आहिस्ता पता भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी यू विल बी लिविंग अ गुड लाइफ। सो दैट्स व्हाट आई रिकमेंड। इंडिविजुअल लेवल पे we will continue to excel. That's the plan for the future of Pakistan. Okay. Recommend book for young boys. My favorite book, The Animal Farm. Read that. Sir, book you will recommend for understanding of human psyche. Jamal Hussain. DK Books की psychology book, it will help you understand, it will give you a broad view of what human psychology is. The Child in You, child psychology को समझने के लिए आप वो पढ़ सकते हैं। देखिए 2 बुक्स अभी मेरे ज़हन में आ रही हैं। ओहो हो ब्यूटीफुल। अली खान राजपर, क्या बात लिखी है आपने मन चले का सौदा में से। At subatomic level, matter cannot exist with certainty, but rather shows tendencies to exist. आपका इस पे क्या व्यू है? मैं अपना व्यू बता चुका हूँ
अपनी वीडियो में. It's a beautiful thought. This is quantum. This is what quantum mechanics is all about. और ये जो आपने एक्सेप्ट लिया, ये मन चले के सौदा में से लिया. खुदी पर देखें आप ना, इकबाल साहब की द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ. आई थिंक असरार खुदी आप पढ़ सकते हैं. ओके, आप जिंदा रूद पढ़ सकते हैं. यू अंडरस्टैंड व्हाट हिज थॉट प्रोसेस इज, एंड देन रिकंस्ट्रक्शन के अंदर उनका एक पूरा लेक्चर है खुदी के ऊपर, जो मैं अभी वीडियो की बात कर रहा था वेंसडे को, जो मैं पोस्ट करूंगा. सो ये 3 रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप आईएसबी टेस्ट प्रिपरेशन बेस्ट बुक. आई डोंट नो सलमान. ओके, kindly make a video on writing. Okay, essay writing. Okay. Wahiduddin Khan. I don't know who the gentleman is. Why religion in the world compare differently? There are a lot of Rai Wasim. I cannot right now recall, but there are many books. अभी मेरे ज़हन में रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स रिकमेंड कर दें. रॉबर्ट ग्रीन की 2 बुक्स बहुत मेरी फेवरेट हैं. इनफैक्ट 3 बुक्स हैं, लिख ले नाम. 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सेडक्शन एंड द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर. लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर भी कमाल की किताब है भाई. सर एवोल्यूशन सच है, बिल्कुल सच है. डज सेल्फ हेल्प बुक्स हैं? सेल्फ हेल्प बुक एक हद तक देखिए, आपको पता होना चाहिए सेल्फ हेल्प की इमारत ना 4-5 चीजों पे खड़ी हुई है. कंपाउंड इफेक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाटएवर यू थिंक you can conceive, you can achieve, control your thoughts, focus, goal setting. ये 4-5 चीजें जिनके ऊपर पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री खड़ी हुई है. सो पढ़े आप, they do help you, they are transformational, they do help you. Okay. अच्छा नौमान, विच बुक कैन मेक ग्रेट माइंड? देखें, ये जो सवाल होते हैं ना यूजुअली, जैसे अक्सर लोग पूछते हैं कि रेकमेंड अ बुक विच कैन इंप्रूव आवर इंग्लिश. नौमान देखो, अंडरस्टैंड दिस थिंग. कोई एक किताब आपका माइंड नहीं बना सकती. नथिंग कैन चेंज योर माइंड. नो सिंगल बुक कैन एक्चुअली चेंज योर माइंड. हाँ, कुछ बहुत ही रेयर, जैसे रिकंस्ट्रक्शन की मैं अक्सर बात करता हूँ. अगर आपने, ये आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि वो किताब बताएं जिससे हमारी ज़हनी नशोनुमा हो सके, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो सके. ओके, सो हाउ आई सी इट इज कि नो सिंगल बुक कैन इंप्रूव योर इंग्लिश, नो सिंगल बुक कैन चेंज योर माइंड. If you want to change your mind, develop a habit of reading. And in due course of time, in 2 years, 3 years, 5 years, a time will come when you will feel enlightened, when you will feel that you have intellectually grown, where you will feel that I am different from the community, I'm different from the herd. When I talk substance. जब मैं लोगों से बातें करता हूं तो उसके अंदर सब्सटेंस होता है, उसके अंदर डेप्थ होती है. वो सिर्फ सतही किस्म की सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती. सो आई कैन नॉट. आप मेरे यूट्यूब चैनल पे 300 वीडियोस हैं, 300 बुक रिव्यूज हैं. अब वो 300 बुक्स आप पढ़ सकते हैं, आप उधर जाके देख सकते हैं. बट आई कैन नॉट रिकमेंड यू एनी सिंगल बुक विच कैन मेक योर माइंड ग्रेट. ओके, ऑल आई कैन से इज डेवलप योर हैबिट्स. फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स मेक यू. ओके, oh, Zimal Fahim, sir, what is your biggest failure? I don't know. There's nothing I can think about. The good thing, maybe I'm fortunate कि मैंने जिस चीज में हाथ डाला है अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है. So let me think. चले, perhaps I wanted to learn more languages. मैं चाहता था मुझे फ्रेंच भी आए, मुझे रशियन भी आए, जर्मन भी आए. इट्स नेवर टू लेट. और मैं चाहता था कि मैं 2-3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकूं. वो अभी मैं नहीं लर्न कर सका. मे बी इन द फ्यूचर आई लर्न इट. सो दैट यू कैन से इज वन ऑफ माय फेलियर्स. Laws of human nature. Okay, I'll try to. Why does society not rid of its dogmatic beliefs? Bilal, I have spoken at length about this in my reconstruction series.
द प्रॉब्लम इज वी हैव बिकम होस्टेज टू मुल्लायत, मुल्लाइज्म जिसको कहते हैं। तीन चीजों ने मुसलमानों को बर्बाद किया, मुल्लायत, मलूकियत और खानकाइयत। मुल्लायत इज द मुल्लाइज्म, the entire thought process. मलूकियत इज मोनार्की, द किंगशिप, एंड खानकाहियत, ये जो खानकाही निजाम होता है, बेटा और फिर उसके बाद पीर साहब और फिर उनके बेटे और फिर सज्जादा नशीन एंड ऑल। वजह क्या है? ये आपकी सोच को जकड़ लेते हैं, ये आपके दिमाग को नर्चर नहीं होने देते, ये अपनी पूरा जो नैरेटिव बनाते हैं, ये नैरेटिव बनाते हैं डर के ऊपर। ओके, दे मेक यू अफ्रेड कि अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद नीच तो नाबूद कर देगा, और ये करो और वो करो। सारी जो इमारत है, कभी आपसे कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं होगी, हमेशा डर की बात होगी, और बेमकसद बस इबादात में लगाया हुआ है, रिचुअल्स के अंदर लगाया हुआ है, लाइक यू सेड डॉगमेटिक बिलीफ्स, rather than following the true philosophy of Islam. Okay, and that's what I have alluded to in my videos in the reconstruction lectures. Okay, so मुलायत, मलूकियत और खानकाहियत, ये आपकी सोच, जो भी चीज, एक बात याद रखें, ये जो सारे इज्म्स होते हैं ना, कम्युनिज्म, फेमिनिज्म, कैपिटलिज्म, इस्लामिज्म, हिंदुइज्म, वट एवर द इज्म्स आर, इनका एक लिटमस टेस्ट मैं आज आपको बता रहा हूं। कोई भी इज्म, कोई भी थ्योरी, कोई भी डॉगमा, कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी नजरिया अगर आपकी सोच को कैद कर रहा है, आपकी परवान को रोक रहा है, आपको सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा, तो वो फिलॉसफी, वो फलसफा, वो आइडियोलॉजी फेक है। एनीथिंग, any philosopher, any falsafa, any ideology, any thought, any intellect, any school of thought जो आपकी सोच को उड़ान देता है, जो आपकी सोच को बड़ा करता है, जो आपकी सोच को लिमिटलेस करता है, जो आपको सोच, जो आपको आपको एम्पावर फील करवाता है, जो आपको मोटिवेट करता है, वो फलसफा बेहतरीन है। तो ये मुल्लाइज्म का मसला है, इनकी सारी जो कायनात है, इनकी सारी जो इमारत है, वो खड़ी हुई है डर के ऊपर एंड रिचुअल्स के ऊपर, मजहबियत के ऊपर, दीन के ऊपर नहीं। जब दीन होता है तो फिर इंसान का जहन खुलता है। जो हुजूर पाक का मैसेज था वो दीन का मैसेज था, इसी वजह से वो इतना पॉपुलर हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जीशान नेक्स्ट मार्वेलस एपिसोड आ रही है दिस वेडनेसडे, आई हैव जस्ट अनाउंस्ड। सर रिव्यू ऑन द बुक ऑफ हांस रोसलिंग, व्हाट अ बुक, अभी ये मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने आज ही खत्म की है बुक। व्हाट एन अमेजिंग बुक यार, क्या काम कर गए हैं ये लोग। उफ, यू नो, इस बुक को बार बार मैं जब पढ़ता था ना, मैं पढ़ते हुए मैं रख के आई यूज्ड टू बिकम ब्रेथलेस। मुझे इतना, मतलब मैं इतना ओवरवेल्म हो जाता था, आई हैड टू कीप दिस बुक असाइड। मैं 5-10 मिनट रखता था एंड फिर आई यूज्ड टू रीड अगेन। इतनी इतनी जालिम बुक है, इट्स सच अ माइंड बॉगलिंग बुक, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम बुक। सो अगेन, गोरा इसीलिए कामयाब है भाई के रैशनली सोचता है, लॉजिकली सोचता है, रेटरिक, बयानबाजी, जिंगोइज्म के ऊपर नहीं चलता। इट्स अ मार्वेलस बुक दिस, फैक्टफुलनेस, यू मस्ट रीड दिस। व्हिच इज द बेस्ट कंट्री फॉर हॉलीडेज? देखो यार, मुझे तो हॉलीडेज का मजा आता है। आई लाइक Thailand is one of my favorites, and I love like Jordan as well, and Singapore. These three are one of my favorites. Learning good habits, I think if you want to learn good habits, learn it from the West, from the Americans and the English people. क्या कमाल का क्वेश्चन पूछा है अहमद हसन आपने। Why Firdaus Jamal has acted all four characters in मन चलेगा सौदा? ब्यूटीफुल क्वेश्चन यार। देखो, जो मन चलेगा सौदा का फलसफा है ना अहमद, वो है क्वांटम थ्योरी के ऊपर, ठीक है, जिसमें वो कहता है ना कि एक आप मौजूद हैं भी और मौजूद नहीं भी। एक इंसान एक हुलिये में एक जगह मौजूद है, वही इंसान दूसरे हुलिये में किसी और जगह मौजूद है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटम फिजिक्स, जहां पे आप अपनी फॉर्म, अपनी शक्ल, आप होते वही हो, लेकिन आप अपनी, मतलब फ्रॉम physical point of view or from your shakal point of view, you're the same, but you can transform into different versions of yourself. तो वो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की है इसमें।
Okay, sir, book review on how to. I haven't read this book, my dear friend. ये प्लीज बार बार ना पूछा करें, मैं पढ़ लेता हूँ, वो फिर ना लोगों का कुछ बहुत की मैसेजेस रुक जाते हैं, प्लीज। सर किसी बुक का नेम बता दें जो अपनी रीडिंग अच्छी करने के लिए। अगेन सैयद, ये जो सवाल होते हैं ना, ये देयर इज नो मैजिक पिल। ओके, आई कैन नॉट रिकमेंड यू एनी मैजिक पिल कि आप उस किताब को पढ़ेंगे और एकदम से आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। इट डजंट हैपन दिस वे। ओके, सो आई कैन टेल यू हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, ये पीछे सारी पड़ी हुई हैं, ये सामने पड़ी हुई हैं। आई डोंट नो, द आंसर इज आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट इज, thank you, Vicky Khan. You have sent me the stars. Thank you so much. Okay, okay. One session with Sayyid Muzammil. Okay. I have to enjoy. Yeah, I don't know. I don't know. Okay. सर ये दज्जाल यार ये क्या सवाल है? Next courses in Urdu in the initial 4 years. My world, is it better to implement reading habit? Of course, देखिए जब बचपन में जो हैबिट्स बच्चे डेवलप कर लेते हैं ना, they go a long way in nurturing their future. So there's no alternate for this. Of course, बचपन से अगर आप उनको पढ़ाई में लगा देंगे, रीडिंग में लगा देंगे, लर्निंग में लगा देंगे, तो they will be able to develop that habit and nurture it in the future. विकिपीडिया पर बिल्कुल फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है? सो ऑलवेज वेरीफाई द इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस सोर्सेज, दैट्स व्हाट आई डू। रीडिस्तान इकबाल इज करंटली नॉट अवेलेबल इन इंडिया। मुझे इंडिया से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई है रीडिंग रीडिस्तान के बारे में, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट बीन सक्सेसफुल इन लॉन्चिंग दिस इन इंडिया सो फार। ये स्टोइसिज्म की फलसफे से मैं एग्री नहीं करता हूं, थोड़ा सा ना वो, इट डजंट लेट यू हसल। तो मैं उसके फलसफे, अच्छा फलसफा है, बट आई डू नॉट एग्री विद दैट। बट आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। भाई ये मैंने बुक नहीं पढ़ी, हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड जॉब। आई हैवंट रेड द बुक, होपफुली आई ट्राई टू रिव्यू इट। डॉक्टर रोजीटा आर्मिटेज, yes, I will hopefully review that book soon. Sir, what do you think about present judicial crisis in country? Your comments, please. My comments is very simple, Javed. जब पाकिस्तान और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी ना, तो सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था हम इन दोनों मुल्कों के बारे में, इंडिया तो कहीं खैर इससे निकल गया है, लेकिन उसने कहा था पावर विल गो इन द हैंड्स ऑफ बूटलिकर्स एंड मेन ऑफ स्ट्रॉ who will be corrupt, who will be rogue and who will not have any character. ओके, ये पूरा उसका एक स्टेटमेंट है, लंबा पूरा पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। तो जब ऐसे लोगों के पास पावर आ जाती है मुल्क में, जहां पे, एंड दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, ओके, आई एम नॉट, दिस इज अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड अक्रॉस ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड एवरीवन। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कैरेक्टर की कमी है, हमारे मुल्क में बड़े लोगों की कमी है। आप कभी गो टू सिंगापुर एंड यू विल रियलाइज कि एक बंदे ने, ली कुआन यू ने, एक बंदे ने अपने विजन के जरिए, अपने कैरेक्टर के जरिए पूरा मुल्क को बदल के रख दिया। आप मलेशिया जाएं, महातीर मोहम्मद ने, एक बंदे ने अपने कैरेक्टर के जरिए, अपने विजन के जरिए मुल्क बदल के रख दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन को देख लें, अब्राहम लिंकन को देख लें, एक बंदे ने मुल्क के विजन को, कैरेक्टर को चेंज करके रख दिया, ठीक है? अब आप देखें मोहम्मद बिन सलमान, एक इतनी कंजर्वेटिव सऊदी सोसाइटी को वो बंदा रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ बातें हैं। सो माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस इज, व्हेन यू हैव पीपल मैन ऑफ स्ट्रॉ अक्रॉस है, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पीटीआई है, वो एन है, वो सारे सारे के सारे एक जैसे हैं भाई, ठीक है? सो आई डू नॉट फेवर एनीवन।
ओके, अच्छा जी। थैंक यू जावेद, थैंक यू। Recommend me few life changing books. Okay, this goes for everyone. Okay, all of the people who are listening to me. एक सवाल आया, recommend me some life changing books. So here you go. Number 5, मैं 5 books recommend करूंगा. Number 5. Number 5 is Think Again. Okay, by Adam Grant. Number 4 is 48 Laws of Power by Robert Greene. Number 3 is Why We Sleep by Dr. Matthew Walker. Amazing book. Number 4 is 0 to 1 by Peter Thiel. वो लोग जो अपना business start करना चाहते हैं. Number 1 is Reconstruction of Religious Thought in Islam. It's a very dense book. It's very hard to understand, but once you do, your entire perspective of your life will change. ठीक है मुदस्सिर? And I loved Readistan. I look forward to the second edition soon. Thank you, Atif. You loved Readistan, and I'm really thankful. I like your reviews. How to develop reading habit in kids. मुदस्सिर, याद रखें, अगर पेरेंट्स रीडिंग नहीं करेंगे ना तो बच्चे कभी भी रीडिंग नहीं करेंगे. If parents spend time with books, the children will also spend time with books. So the first thing that you need to do is, if you're a parent, बच्चों के सामने पढ़ना शुरू करें. बच्चे खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देंगे. दूसरा, रीडिंग को इंसेंटिवाइज करें. फॉर एग्जाम्पल, आप कहें कि अगर आप हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर एक बुक खत्म करेंगे तो you'll buy children a gift. It can be anything of their choice. ये इंसेंटिवाइजेशन होगी ना, तो इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, और सॉरी ऑपरेंट कंडीशनिंग. अ बिहेवियर व्हिच इज नॉट रिवॉर्डेड विल नॉट बी रिपीटेड. सो ऑपरेंट कंडीशनिंग के जरिए लोगों को, बच्चों को वर्गलाएं इन द पॉजिटिव सेंस एंड स्टार्ट गिफ्टिंग देम थिंग्स, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एक कैलेंडर सेट करें पूरे साल का और उनके कमरे के अंदर लगा दें कि पूरे साल में उन्होंने ये 20 किताबें खत्म करनी है. उनकी जिंदगी का ये जब उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा ना, उनकी हैबिट बन जाएगी, तो फिर आपके इनिशियल 2 साल मुश्किल होंगे, उसके बाद इट विल बिकम पार्ट ऑफ देयर नेचर. तीसरी चीज ये कि घर में रोजाना की बेसिस पे अंग्रेजी न्यूज़पेपर मंगवाएं. 25 साल से मेरे घर में रोजाना फिजिकल न्यूज़पेपर आता है. ओके, सो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो बच्चों के अंदर भी वो हैबिट ट्रांसफर हो जाएगी, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल बी एबल टू डेवलप द हैबिट. Afia, thank you, Afia. Great work. Keep it up. You're inspiring us in so many ways, especially when you told the story of your early life and how you have faced all thick and thin bravely. I look up to your personality. Thank you, Afia. Really thankful. Thank you so much. I do not agree with Robert Camus as well. देखो यार, ये जो वेस्टर्न थॉट है ना, ये एक पॉइंट पर आके इट बिकेम रियली पेसिमिस्टिक. ओके, I absolutely do not agree with Robert Camus, and life is not meaningless. Life is absolutely meaningful. Life has a purpose attached to it. I have spoken at length about this in my videos. You are the one who are the custodian of your life. You are the one who need to find the purpose of your life. You are the one who needs to give the purpose to your life. You are the one who needs to discover and explore कि आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, आप क्यों पैदा हुए हो. Okay? So I do not agree with him at all. Thanks for using social media for a positive purpose and inspiring so many people. Thank you, Fatma. Thank you so much. Russia is intellectually stagnant. I do not agree with Bertrand Russell as well. Russia, I don't know वो किस पर्सपेक्टिव में, किस किताब में उसने ये बात लिखी है. मुझे तो रशियन लिटरेचर बहुत ज्यादा पसंद है. मुझे लियो टॉल्स्टॉय बहुत पसंद है, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की. लोलिटा का जो राइटर है व्लादिमीर नाबोकोव, ही इज एक्चुअली अ रशियन अमेरिकन. सो आई पर्सनली लव रशियन लिटरेचर. Credibility book review on leadership, which tells being Sadiq and Amin is the top quality of a leader. Please recommend books for family and middle class students. Majid, write it down. आपके बच्चे हैं मेरे ख्याल में 5th और 8th क्लास में. इन बच्चों के लिए पूरी रोल डाल की सीरीज ले आए. इन बच्चों के लिए ह्यूल्स वर्न की एक बुक है 20,000 लीग्स अंडर द सी, वो ले आए. इन बच्चों के लिए एक और बुक लेके आए, ओल्ड मैन एंड द सी. इन बच्चों के लिए एक और बुक लेकर आए, द की इज CAY, नॉट KEY, द की बाय थियोडोर टेलर. ये वो किताबें हैं. बच्चों के लिए लेकर आए रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की ट्रेजर आइलैंड. ओके,
बच्चों के लिए लेकर आए चार्ल्स डिकेंस की द टेल ऑफ टू सिटीज, ये 5-6 बच्चों के लिए लेकर आए द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। ओके, ये ये वो किताबें जो इस क्लास के बच्चों के लिए जो है ना, दे आर मर्क्यूरियल, दे होल्ड मर्क्यूरियल पावर। एमडी कैट करना चाहिए, अच्छा है या नहीं? ऑफ कोर्स डू इट। सर कुड यू रिकमेंड 3 बुक्स फॉर लर्निंग हिस्ट्री? ओके, सेपियंस इज वन ऑफ देम। नंबर 2, आई डोंट नो, अब आप इंडो पाक हिस्ट्री की बात करें, किस हिस्ट्री, इन जनरल हिस्ट्री की बात करें, डी के बुक्स की एक बुक है बड़ी हैवी, ये पीछे यहाँ पर पड़ी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली, ये ब्लू कलर की, सॉरी ब्राउन कलर की, ये तकरीबन आई थिंक 6 या 7 हजार रुपए की। इट्स वेरी एक्सपेंसिव बुक अगेन, बट इट्स एन इन्वेस्टमेंट इनटू योर फ्यूचर। आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, फिर उनके भी बच्चे पढ़ेंगे। डी के बुक्स की जो हिस्ट्री की बुक है, ये बहुत अच्छी है। इट कंटेन्स एंटायर स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड व्हाट एल्स। अगर आपने इंडो पाक हिस्ट्री को पढ़ना है तो फिर आप इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान पढ़ सकते हैं, फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ सकते हैं, और प्रोफेसर इश्तियाक अहमद की जिन्ना हिज सक्सेसेस एंड फेलियर्स पढ़ सकते हैं। लॉट ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री। ओके, टाइम फॉर द फेसबुक ऑडियंस। सर नंबर 3 और नंबर वाली बुक दोबारा बता दें। नंबर 3 और, अच्छा मैं दोबारा, थिंक अगेन है, थिंक अगेन मैंने बताई, 48 लॉज ऑफ पावर मैंने आपको बताई, 0 to 1 मैंने आपको बताई, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम बाय अल्लामा इकबाल वो मैंने आपको बताई, और एक और बुक मैंने आपको कौन सी बताई थी, व्हाई वी स्लीप, मैथ्यू वॉकर की व्हाई वी स्लीप। ओके, a good dictatorship or a worse democracy? The modern In modern society, dictatorship cannot hold. I think it has to be, we have to give in for democracy. Best books on psychology, human psychology. One of the best book is Introduction to Psychology. Okay, मेरी जो साइकोलॉजी की बहुत सारी नॉलेज जो है वो इस बुक के ऊपर बेस्ड है। चाइल्ड साइकोलॉजी को आपने समझना है तो आपने एक बुक पढ़नी है, द चाइल्ड इन यू। दैट्स अगेन अमेजिंग साइकोलॉजी बुक। Okay, I'll review credibility. How could you recommend the poetry book in Roman? I don't know of any. गालिब की एक बुक है जो उर्दू रोमन के अंदर है, उसका नाम ही गालिब है, वो आप पढ़ सकते हैं। Is it true that competition kills creativity? Yeah, to some extent, but for me, as far as I'm concerned, I think competition it keeps you on your toes. How to enjoy your life and your job? I haven't read this book. I'll read it. Do you think agriculture has a future in Pakistan? Pakistan needs to move from being an agrarian country to being a technology exporting company. One country. Once we do that, only then we can succeed as a country. Period. हम लोग सारी उम्र सुनते रहे पाकिस्तान इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, पाकिस्तान इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, एंड इट्स सो शेमफुल, इट्स सो एम्बैरेसिंग कि रोजाना आटे की लाइन में लग के 5-6 लोग मर रहे हैं। ये एग्रेरियन इकोनॉमी। So Pakistan needs to move from agriculture to a technology exporting country. That's the thing which will get us out of this quagmire. Some scholars say Pakistan is built on true Islamic values. Pakistan was perhaps built on true Islamic values, but those true Islamic values, people don't even know what true Islamic values are. If that would have been the case, we would not have been in this situation. In India, student can't but this much books. There's a lot of literature and syllabus. Almost a guy need to be. Okay, good to hear that. मार्क्स अच्छे नहीं है तो फिर देखिए, मार्क्स अच्छे नहीं है तो मेहनत करें। दैट्स व्हाट आई कैन से। यू नीड टू वर्क हार्डर। ओके,
Sir, start science book reviews. Good suggestion. I'll write this. Yes, I will review A Brief History of Time, and I'll review a lot of books around science, hopefully, soon. Okay, Bruce Wayne recommend me books for communication skills for beginner. There is one book, The Art of Public Speaking. It will really help you improve your communication skills. दूसरा जो बुक है ना बड़ी फेमस, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसको भी पढ़ के आप कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी बेहतर कर लेंगे. Why you left reviewing reconstruction of religious thought in Islam? असद असद, गुड क्वेश्चन. इसकी मैं आपको रीजन बता देता हूँ. लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी. अच्छा, जीशान ने लिख भी दिया कि वेंसडे, बाय द वे वेंसडे को उसका रिव्यू आ रहा है. जो रिकंस्ट्रक्शन बुक है ना, ये देखें, आज भी मेरी टेबल पे ये पड़ी हुई है. ये उसका तसील तफीम, और ये पिछले 4-5 साल से मुसलसल मेरे टेबल पे पड़ी है. ये बुक इतनी डेंस है, इतनी मुश्किल है, इतनी सो हार्ड टू अंडरस्टैंड कि उसके ऊपर मुझे ना वक्त बहुत लगाना पड़ा है. एंड इट नीड्स योर अनडिवाइडेड अटेंशन. ओके, मेरे पास वक्त, क्योंकि आई एम इनटू सो मेनी थिंग्स, सो समटाइम्स आई फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम. तो जब भी मेरे पास इंटेलेक्चुअल एनर्जी होती है ना, जहां पे अनहिंडर्ड अनइंटरप्टेड इंटेलेक्चुअल एनर्जी होती है ना, तो फिर मैं इस बुक को दोबारा पढ़ता हूँ और फिर मैं उसके नोट्स बना के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ. सो सॉरी, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव सेड के मेरी जो वीडियो सीरीज है, मैं 300 वीडियोस बनाई हैं, उसमें अगर मैं टॉप 5 वीडियोस की बात करूं तो उसमें वन ऑफ दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट. मुझे इवन लोगों ने यहां तक मैसेजेस किए कि आपकी सीरीज ने हमारी जिंदगी बदल दी, हमारी सोच बदल के रख दी है. सो आई एम रियली रियली थैंकफुल. एंड इसका जो नेक्स्ट 4th लेक्चर है वो इंशाल्लाह वेडनेसडे को आपके पास आ जाएगा. ओके, thank you Zainab. Breedistan is best book in one book. We have 50 books. Thank you Zainab. What is your purpose in life? I have told this purpose a lot of time. अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब देने के बाद मैं लाइव सेशन को एंड कर दूंगा. ओके जी मेराज, मैं आई डू बिलीव. ओके, सो दैट्स आंसरिंग योर क्वेश्चन. साद मिर्जा के क्वेश्चन के आंसर के बाद इंशाल्लाह आई विल कॉल इट टुडे, एंड इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करूंगा. अब इस बात को दोनों फेसबुक की ऑडियंस भी और यूट्यूब की ऑडियंस भी सुन ले. इनका सवाल है, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ? Okay, now I'll give a very detailed answer so you understand once and for all what's the purpose of my life. देखिए, इंसान जब ग्रो कर रहा होता है ना इन द 20s, एक ऐसा मुल्क जो डेवलपिंग मुल्क है या अंडर डेवलप मुल्क है, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि हम लोग फाइनेंशियली साउंड हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ. थैंकफुली आई बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. जब इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, कमा लेता है, तो इंसान का फिर ज़हन काम करना शुरू करता है. फिर इंसान रोटी पानी के चक्कर से एक ट्रांसेंडेंटल सोच होती है, एक बड़ी सोच के लिए इंसान निकल जाता है. वो बाबा फरीद का एक शेर है कि पंज रुकन इस्लाम दे ते छेवां फरीदया टुक. टुक मीन्स रोटी. पंज रुकन इस्लाम दे ते छेवां फरीदया टुक, जे छेवां ही ना लब्बे ते पंजो ही जांदे मुख. समझ आई? अगर आपको रोटी नहीं लगेगी ना, तो आपको सारे जो है ना इस्लाम के रुकन, आपको सारी इबादत भूल जाएंगी. पहले जब आप अपने आप को फुलफिल करते हो फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. सो दैट वाज माय फर्स्ट इनिशियल गोल ऑफ लाइफ. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि जिंदगी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है. पैसा तो कामयाबी की सिर्फ एक पहली लेयर है, एक पहली सीढ़ी है. कामयाबी तो बहुत बड़ी, बहुत ह्यूज, बहुत कोलोसल कॉन्सेप्ट है, जिसकी पहला स्टेप, जिसकी पहली सीढ़ी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वड्डी गड्डी ते वड्डी कोठी ते ते वो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये कामयाब हो गया जिंदगी में. याद रखें, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस. सो आई रियलाइज्ड कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ माय लाइफ 5 years बैक. और ये जो बुक बढ़ी है, ये मेरी जिंदगी के पर्पस का एक हिस्सा है और एक बहुत बड़ा हिस्सा है. ओके,
अब पर्पस के ऊपर आ जाता हूँ। पर्पस ये है कि आई स्टडीड द लाइफ ऑफ सक्सेसफुल पीपल। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को स्टडी किया, बड़े बड़े लोगों की जो हिस्ट्री में गुजरे उनकी जिंदगी को स्टडी किया। कामयाब वो लोग होते हैं जो अपने मरने के बाद एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं। लेगेसी इज अ वर्ड व्हिच मींस डिड आई मैटर। क्या मेरी दुनिया में मेरी कोई हैसियत थी? क्या जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा पीपल विल मिस मी एंड पीपल विल से दैट शाहरुख वाज द पर्सन जिसने इतने लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट किया? तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड फाइंडिंग मीनिंग इन माय लाइफ, एंड दैट मीनिंग वाज कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मैं कितने लोगों की जिंदगी को इन्फ्लुएंस करके जाऊंगा। ओके, कितने लोगों को एजुकेट करके जाऊंगा, कितने लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करके जाऊंगा। विल आई लीव वर्ल्ड अ बेटर प्लेस थ्रू माय एफर्ट? क्या मेरी वजह से, मेरा पर्सनल टारगेट ये है कि मेरी वजह से 10 लाख लोगों की जिंदगी बेहतर होनी चाहिए इन आवर कंट्री। तो मैं क्या तो उनको पढ़ा के, एजुकेट करके, उनको नौकरी दे के, उनका पर्सपेक्टिव बदल के, उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बदल के, उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करवा के, उनका सोच का जाविया बदल के, किसी भी तरीके से अगर मैं लोगों की जिंदगी और उनकी सोच को बदल सकूं, तो दिस इज माय अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। ओके, अब ये होता कैसे है? आप कामयाबी की दूसरी सीढ़ी सीढ़ी तब चढ़ते हैं जब आप अपने स्किल्स को जो अल्लाह ने आपको दी है और जो आपने खुद डेवलप की उनको ऑप्टिमाइज करते हैं, अपने खुद ही को तलाश करते हैं, अपने सेल्फहुड को तलाश करते हैं। मुझे ये पता लगा कि मैं अच्छी बात कर सकता हूँ। ओके, मैं अच्छा अच्छा बोल सकता हूँ, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ। तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, मैंने यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना शुरू किया। ओके, अपनी स्किल्स को ऑप्टिमाइज किया। अपने ये जो सारी किताबें, इनमें से 80% किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। ये सामने भी इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं। इनमें से 80% किताबें मैंने पढ़ी हैं। मैंने वक्त लगाया, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड किया, कोर्सेज किए, अंग्रेजी सीखी, न्यूज़पेपर्स पढ़े, ट्रैवल किया दुनिया में। आई इन्वेस्टेड ऑन माई सेल्फ। Once I optimized my skills, it was my responsibility. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, मैं, ताकि आपको रिलेट कर सके। सूरह अल नाम आयत नंबर 165। वही है जिसने तुम्हें जमीन का खलीफा बनाया और तुम में से बाज के मुकाबला ज्यादा बुलंद दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया है इसमें तुम्हारी आजमाइश करे। ये कुरान मजीद है जी, सूरह इनाम आयत नंबर 165। ठीक है, सो ये हर वक्त मेरे रेफरेंस में रहती हैं चीजें। अब इसका क्या मतलब है? अगर अल्लाह ने आपको स्किल दी है बोलने की, तो अल्लाह आपसे पूछेगा कि तुमने उस स्किल का क्या किया। अगर अल्लाह ने आपको एजुकेट करने की स्किल दी, तो ही विल आस्क यू कि आपने उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया। अगर आप अल्लाह ने आपको आर्किटेक्चर की स्किल्स दी, तो वो पूछेगा आपने उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया। अगर अल्लाह ने आपको अच्छा गला दिया, अच्छा सिंगिंग एबिलिटी दी, तो ही विल आस्क यू द क्वेश्चन। ओके, सो my purpose, second step of success was, did I optimize, or second purpose of life was, did I optimize my skills? Of course I'm in the process of optimizing that. Third is, like I said, आप इस दुनिया में आते हो एक बीज की तरह। उस बीज ने जमीन फाड़ के ग्रो होना होता है, एक दरख्त बनना होता है। और अगर वो दरख्त बन के अपने ही अंदर महदूद रह गया और मैं दरख्त बन गया और पीछे मैंने कोई फसल